Hello everyone, welcome to the sixth lecture of this Python series where we will start coding from scratch. Okay, so let's begin with the examples. Whereas in last lecture we have seen some examples, okay, to find the average of two numbers entered by the user. As you can recall, I have given some sums like add number using user input or to find a remainder. I hope you have practiced this question, whereas in this lecture, I'll let you help to solve these problems. Okay. So starting with, before starting this session, I would like to introduce with the VS Code as uh, we have learned many things in ideally, okay, in this environment. Whereas for developers, we mostly use VS Code because it is very feasible to use this VS Code in many things. Okay, this is a platform where we're gonna use the where we're gonna use to write our problems, okay, and solve the Python programs. So before starting, okay, I hope everyone have installed the VS Code. If not, I'll put on the link for how to install the VS Code. Okay, first I'll show you how to open this or how to run this. Okay, so if suppose you have a folder already, okay, like this examples or the operators part 2. Wait a second, data types. Okay, so for data types we have learned so many things, and can you see the last one we have did the addition of two numbers. Okay, so in case you don't have any file, we will create a file from here, okay, for Python file, and we can title this, or we can start. Okay, so we can just right click over here, or we can just save a file. Okay, while control is, we can save the file in whatever name we can put. So before starting, I'll just recall what we did in the last lecture. So for last lecture, we have seen some examples. Okay. So going forward, I'll just do a quick revision where where we're gonna learn whatever the topics we have covered. Okay. So I'll start with this new uh, file. Okay. So I'll just cancel out all these things. Okay, and start with our first. I'll save this file. Okay, in desktop, named as examples 1. Okay, or instead of, I'll just do problems part 1 dot py. So py is the extension for Python. It is required to for the Python file. Okay, in VS Code, if you are saving the Python file, you use the py extension. Save the file. Okay, now you can see I I'll just start with hashtag Python revision. Okay, can you see it is already giving a prompt or something like that, which would help us to write these things. Okay, write a program to find a factorial. So I'll just escape, and we'll start with the first topic we have covered was comments, right? So whatever it is, I'll put it in a comments hashtag. सो अभी कमेंट्स में हमने देखो सामने ही आ गया कि फर्स्ट एक सिंगल कमेंट था। ये वीएस कोड अभी बहुत एडवांस हो चुका है, पहले इतना ये नहीं था। ओके, सो अभी देखो अगर मैं कमेंट्स भी लिखूँ तो जस्ट नीड टू एंटर हैशटैग सिंगल लाइन कमेंट, देन द सेकंड वाज अ मल्टी लाइन कमेंट। ओके, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम लोग यूज करते थे, राइट?
क्या यूज करते थे हम लोग उसके लिए? This three quotes, one, two, three, then space, whatever we have to write like hello world, and then again three dots. Okay. Second, we will start with variables. Okay. For variables, we have seen the variable declaration, whereas variable declaration a is equals to 10, okay, b is equals to 20, and in case we are declaring with type, so a is equals to a int is equals to 10. Okay, int, what does int is? Int means it is integer. Okay, while b integer is equals to 20. Variable declaration with type and value. Same thing with type and value declaration, and the next thing we discussed has many data types. Okay, whereas the int was the data type. Okay, and for int we write a is equals to 10. For float b is equals to 20.5, and for string what we do, we use hello world. Okay, next we gonna start with the next part we have seen was input and output part. Okay, whereas I how to take a input from a user, whereas a is equals to input. What I'll do is just zoom it in, because in case the it is not visible, a is equals to enter number. Okay, whereas how can I suppose I am taking an enter number, so I'll print a. Okay, and for that, before running this thing, I'll just comment this with the multi-line comment. Okay, hmm. So for in this VS Code, we control S. Okay, already saved the part, and we go for run without debugging. Okay, Python debugger. Wait a second. So here it is asking enter a number. I can write 456 any number, and it is not printing. Why? Because we didn't use the print A in it. So using print A, I'll just do this again. Can you see it is showing Control F? By using keyboard, we can also run this thing. Okay, so I'll use Control F5. Here it is. It is showing it again. Enter number 456, and can you see it is printing 456? Okay. So this is the basic thing in VS Code, writing input. Whereas the next thing we're gonna see it input from user with a type, how to write it. So here we use the type where we'll use the integer type, and to using the integer type we will use the int before input. Okay, so we will write int input enter a number. So in case if I write print a, okay, whereas this means enter a number 456, again it will ask a enter number. If I write my name Anand, it will give a error.
What it is giving? It is giving a value error. Whereas it means invalid return for int with base 10. It means we are giving instead of giving an integer number, we are giving it a string. Okay, so it is not acceptable, so it will throw an error. So we are done with the input part, and we have seen the operators, right? For operators, what I'll do is I'll open a new file over here so that we don't waste any more time saying things. Like operators, we have done things. We have learned the Python operators, okay? And there are the types of the Python operators, whereas there are seven types. First type is the arithmetic operator. Second is the assignment operator. Third is the comparison operator. Fourth is the logical operator. Fifth is the identity operator. Sixth is the membership operator, and the seventh one is the bitwise operator. Whereas let's start with the arithmetic operator. It gives the operators like addition, subtraction, multiplication, division operator where we use slash mark, and for multiplication asterisk. Modules operator, it means it gives the value for the remainder where we use percentile between the two numbers to get the output of the two numbers, whereas we get the value of a remainder. Okay. Sixth is the exponential operator where we use where it means that raise 2. Okay, so we get the value of the raise 2 by using this two asterisk marks between two numbers. The seventh is the floor division operator where it gives a whole number by using the two slash. Okay, in division operator it will always give you a decimal point. Okay, whereas by using the floor division operator it will give you the whole number where you don't get any decimal points. Okay. The second is the assignment operator, where the assignment operators are used to assign the values to variables. Okay, so in that case, we use operators with is equals to. Okay, so we have seen the example where we have done a plus is equals to 5, where a is equals to a plus y. It means how internally it works that a is equals to a plus y. Whatever the value of a, it will adds with the next number we have added. So it 5 if I take has a 5. Okay, so it will give 5 plus 5 which is 10 and print a a. It can be used for the it is known as the increment and decrement operators too. Okay, the third one is the comparison operator. We have seen equal operator, not equal operator, greater than. So we have covered all these things, and logical operators too, where and, not, or and not. Okay, so we have, instead of using those symbols, what we use alphabets like and, we use or and not, not. Okay, to reverse the results and all. Whereas the last two operators were not last two, it was the last three operators. Okay, so identity operator was is and is not. Okay, where what we do is if we are taken a variable, okay, it checks that if the variable name is name one, which compare two variables. Okay, we compare the values of two variables, that is it correct, is it same, or it is identical or not. So based on that we use identity operator using the is operator. Likewise in membership operator we use in and not in, okay, to check whether the names are present in the list or not. Okay. The last one is a bitwise operator, which we don't use mostly because this operator is mostly used in the application programming or the CNC machines, okay, which are based on 0101 part. So it is not been used in the Python very much. So coming to the so this is the revision we had, and coming to the new not new, I would say the examples we have learned in the previous lecture. Examples operator. Yeah, here it is. So let's start with this thing. The first was the to find the average of two numbers entered by the user. Okay, we will start with this thing. So first I'll take this and start with the problem start part one. I'll just delete this. Okay, so this is a second program or problem we can say. Write a program to
add numbers using user input. Whereas what we'll do first, as in the first problem, we have used a variable, okay, variable like num1, which will is equals to uh, okay, what is happening is if I, okay, it is doing, okay. So let's start with the second problem. Mm, hmm. Int input enter the value of a num1. Okay, we will add as I have discussed in the last problem that we use int input to identify whether we are writing a number or not. Okay, so we'll use the num1. Second is the num2. Okay, after what we'll do is we have to add number using the user input, right? For adding, what we will do is use a variable like sum, okay, which will do as num1 plus num2. Okay, so after num plus 1 num2 it is stored in a variable. तो वो कैसे दिखेगा? उसका मतलब ऐसे होगा कि जो भी नंबर हम लोग ऐड करें लाइक 5, ठीक है, प्लस 5 विच इज 10, तो वो किस में जाके सेव रहेगा? सम के अंदर सेव रहेगा, ठीक है। वेरस अभी हमें क्या करना है? उसे प्रिंट करना है, राइट? तो प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, हमें उसे ऐड ही करना है, राइट? सो सम ऑफ टू नंबर्स is equals to sum. I'll run this program, control S, then control F5. I'll just clear this terminal and I'll run it again, control S, then control F5. It will show the enter the value of num1. So I'll put 15, 20. Can you see the sum of two numbers is giving 35? Okay. So it's a easy example. I hope everyone have done this program. Let's go with the third. So let's start with the third program, which is write a program to find the remainder when a number is divided by 2. Okay, so we will do this by using the user input. So in the next line, I'll use again the num1. Okay, because I need to find a remainder. Okay, remainder of a program. So num is equals to, as usual we will use int, okay, to show or to see that we are entering a number, not a variable, okay, while asking for the value of num. Whereas the second part is as we have discussed the divisional operator. Okay, how does the divisional operator looks like? We use percentile between two numbers. Suppose I have to divide 5, 2. Okay. Likewise, if I'm asking a number from a user input, okay. So here instead of 5, what I'll do is use num. Why? Because I have to divide this number by 2. Okay. So it will num divided by 2. For division operator, we use percentile. Whereas I'll use a remainder as a variable, okay, whereas in num divide by 2 whatever the result would be, it will get stored in a remainder, and what I'll do is I'll just print the remainder. Okay, so remainder when a number is divided by 2 and the remainder, also we have discussed the concatenation part where the value whatever I getting in this, it is a value, right? Okay,
is concatenated with the variables, not the variables, we can say string. Okay, to add string and number at the same thing in a print, we used comma, okay, to concatenate it. Now I'll again control S and control F5 to run this program. Again we will get the same thing. Why? Because we have not used the multi-line comments to hide this. So what I'll do, I do it again. I'll use the triple quotes to hide what we have written it. Okay. Now I'll control S and control F5 again. O- Okay, it is asking launch is already running. Do you want to start another instance? I'll put a yes because we can get a new page for it. Okay, where it is asking the enter the value of num. What value? I'll just put 5. Okay, I need to divide 5 with 2. So can you see the remainder when a number is divided by 2 is 1. So if you to divide the number by 5 by 2, it will give you the remainder. Okay. I'll just show you the operator once again. Okay, so to clear that, if we use division operator for the it will give a it is a symbol, okay, for backslash to get the value of the quotient, whereas we have to get a remainder. Okay, whereas we use a modulus operator. So what modulus operator do? Using a symbol of percentile we can get the value of the remainder. So in this question we have been asked that to find a remainder when a number is divided by 2. Okay, so I hope you understood the third problem also. Let's uh, go with the fourth one. Okay, so the fourth program is write a program to calculate the square of a number entered by a user. Okay, again we will write this program by user input. So int input enter a value of num again. So here what we have to do is calculate the square of a number. What a number? Okay, we are gonna use a number, not multiple numbers, only a number. So I'll take a value from a user input. Now calculate the square of a number. I have to calculate. Suppose my number is 2. Okay, what the square of 2? 2 2s are 4, right? But to calculate the square, as we have seen in operators, can you see we can use the value to raise to, value of raise to exponential operator. Okay, so in this case we're gonna use the exponential operator, whereas the exponential gives the raise to part. Okay, it means the square part. So I'll just do it in a way where I'll use a square variable, okay, to store the value of two numbers. Okay, I'll just show you the first how to calculate. Okay, and one more the second trick. So I'll first enter this one. Okay, and I'll save and run. Control F5. Can you see it is asking the enter the value of num? So I'll put 4. So what happens is we are multiplying the same number, okay, the square of a number. Whereas raised to is also the same thing. If I do, I'll just comment this one, okay. And there is a one more trick. If I ensure that using the one more what we said exponential, using the exponential operator, we can also find the square of a number, okay. So using num star star 2, what star star 2 would be, not star, you say it as asterisk, but it is used to find the value of which value?
to raise to value by using the exponential operator. So I'll again save this and run it. Control F5. Enter the value of num. I'll put 5. So 5 as a 25. Okay. So these are the two things we can use to calculate the square of a number. And the last was the use comparison operators to find out whether a given variable a is greater than b or not. So this question. Hmm. So the last question is using comparison operator to find out a given variable a is greater than b or not. So what we'll do is instead of using a now we know okay that we need to use a comparison operator. So instead of taking a user input, we will do it in a simple way where I'll take a is equals to 34, okay, and b is equals to 80. If So in this case, we haven't started with the if else part. Okay. So without using this if else part, can we solve this problem? Yes, we can solve this problem. Yes, writing a print, sorry, if A is greater than B, and what we'll do is use a comparison operator where A is greater than B. Okay. So doing this, what I'll do is save this and run. So we will get a Boolean value. Okay. So can you see A is greater than B? It's giving false. Why it is giving false? Because it's not true that 34 is greater than B. So whereas if I want to have a Boolean value true, I'll change my operator with less than and it will give us the true Boolean value. Okay. I hope we have done some simple programs, still operators, to understand how the operators we can use in our programming. Okay, so okay. Till now we have completed the 5 problems. So for what I would say on based on interview. Okay, so what kind of interview questions we can see that how it is been asked. Okay, so there is one question. I'll type it out. Not that this one. I'll write as a seventh or the sixth one. Trick question. Okay. So instead of writing a what would say. So as you can see, I have in every program we have written write a program to calculate, write a program to calculate. Whereas in interview, it must be saying has a different problem like you earn. I'll write the problem statement, okay, and then we will discuss what we have to do with it. Suppose 50,000, okay, and you earn 50,000. Your rent is 40%, okay. Groceries
I'll say 20%. And entertainment, not entertainment, I'll go for a transport because मोबाइल में तो अभी सब यही फ्री वाईफाई में भी हो ही जाता है. तो I'll say the transport का 10%. What we have to do is, in this problem statement, we have to calculate the remaining money कि कितना बच जाता है अगर हम वो एक सैलरी में से इतना सब खर्चा करेंगे. तो खर्चा करेंगे it means expense, right, in English. So what we'll start with the वेरिएबल. whereas the सैलरी एक वेरिएबल लिया जहाँ पे मैं 50,000. आई होप इट इज विजिबल. तो 50,000 करके एक सैलरी वैल्यू है, ठीक है, जिसको मैंने एक वेरिएबल लिया सैलरी और उसमें स्टोर किया. सेकंड इज रेंट. ओके. अभी मुझे क्या करना है. अभी देखो 40% रेंट है, ठीक है. मतलब ये जो 40 है, 40 इसमें है परसेंटाइल में. कैन आई डिवाइड दिस 40 बाय 100. सो 40 बाय 100 कितना होता है. 40 डिवाइड बाय 100, इट वुड बी 0.40, राइट. वो आप मोबाइल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं 40 डिवाइड बाय कितना होता है. अभी मुझे क्या करना है, जो परसेंट है उसको मेरे सैलरी, अभी मेरे सैलरी में से ही कटेगा, राइट. तो मैं क्या करूंगा कि ये जो सब है, रेंट, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, ये सारे मेरे क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है. 2,000 खर्चा. तो मुझे अपने सैलरी में जो मुझको जितना मैं कमाता हूँ, मैं 50,000 अगर मैं कमाता हूँ, तो वो 50,000 में ये जितने भी रेंट, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, ये सब कटेगा, ठीक है. वो किस तरीके से कटेगा वो मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि आई टेक अ वेरिएबल रेंट, ठीक है. रेंट में क्या होगा, मैं जो सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, वो जो 40% रेंट आता है उसका, ठीक है. वेरएस लाइकवाइज ग्रोसरी के लिए भी मैं क्या करूंगा, सैलरी उसमें ऐड करूंगा, ठीक है. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सैलरी क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सैलरी में से काटेंगे, राइट. ऐड नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि सैलरी में से काटने वाले. लाइकवाइज ट्रांसपोर्ट का भी. तो अभी क्या होगा, हमारे पास ये सब का मिला के कितना बचता है वो हमें एक्सपेंस में डालना है कि हमने रेंट का अगर इसमें मिलाया, ठीक है. मतलब 50,000. अभी वो एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे रहेगा, जब हम लोग स्कूल में अगर कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, तो ये जो 50,000 है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऑब्वियसली वो जो 40% है वो कितना है, 0.45. तो वो ऐसे विजिबल होगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 20,000. तो 20,000 कितना जाएगा मेरा, रेंट में जाएगा वैसे. तो अभी बेसिक कैलकुलेशन तो हमें आता ही है, ठीक है. बट जब हमें उससे प्रोग्रामिंग में करना है, उसको प्रोग्राम में उसे कोड करके हमें मशीन को समझाना, हाँ मुझे कोड करके ये वैल्यूज चाहिए, तो हम कैसे करेंगे वो हम देखने वाले, ठीक है. सो आई होप यू आर विथ मी. अभी तक हमने सैलरी का लेके एक वेरिएबल बनाया जहाँ पे हमने रेंट, ग्रोसरी और ट्रांसपोर्ट का भी ये किया है. वेरएज उसको मैं एक एक्सपेंस करके इसमें डालता हूँ. एंड कैन यू सी, रेंट प्लस ग्रोसरी और ट्रांसपोर्ट, ये सबको मैं किस में डाल के रखूंगा, एक्सपेंस में, जो भी मेरे खर्चे हैं, ठीक है. और हमें क्या चाहिए, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें रिमेनिंग सैलरी कितना है वो देखना है, वो आना चाहिए, राइट. सो रिमेनिंग करके मैं एक इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग आई विल जस्ट पुट अ बैलेंस. ओके. तो बैलेंस में क्या करूंगा, मैं सैलरी में से जितने भी मेरे खर्चे हैं वो माइनस कर दूंगा, राइट. एंड आई प्रिंट दिस थिंग. वेरएस रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ मेरा वो दिखेगा. अभी मैं इसे सेव करके डायरेक्ट रन करता हूँ बिकॉज हम तो यूजर इनपुट यूज नहीं कर रहे. तो इट विल शो रिमेनिंग अमाउंट इज 15,000, राइट. आई होप इतना समझा होगा. हमने वापस मैं समझा देता हूँ कि ये ट्रिकी क्वेश्चन था कि जहाँ पे हमें क्या करना था विदाउट यूजिंग यूजर इनपुट. यूजर इनपुट भी यूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. रेंट, ग्रोसरी जितना भी है, तो हम अगर घर का कुछ कैलकुलेट करने के लिए बैठे हैं तो यूजिंग दिस प्रोग्राम हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं.
जहाँ पे मैंने सैलरी के लिए एक वेरिएबल लिया, जहाँ पे मैंने 50,000 स्टोर किया। ठीक है। रेंट को क्या किया हम लोग ने, सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करके, जो कितना भी परसेंट में था, ठीक है, परसेंट वाइज हमने काउंट किया, राइट। तो उससे वो कटना ही था। तो हमने क्या किया, जितना भी खर्चा हो रहा था, इट मीन्स एक्सपेंस, वो साथ में ऐड करके, और जितना भी एक्सपेंस था उसको सैलरी में से माइनस करके हमारे पास कितना पैसा बचता है, रिमेनिंग अमाउंट, वो देख के ये करना था। ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन इतना ये नहीं लगा होगा। ठीक है। अभी एक और ट्रिक क्वेश्चन विच कैन बी एक्सपेक्टेड इन इंटरव्यूज। ओके। इसको मैं ऐसे करता हूँ। सेकेंड ट्रिक क्वेश्चन भी एक नंबर है, ठीक है। एक नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है। और फिर वही सेम नंबर को, सेम नंबर इज एडेड। ओके। और उसका हमें रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, 36। ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर ढूंढना है। ठीक है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई हो 2 के साथ, ठीक है, और वही नंबर ऐड होके हमें रिजल्ट में कितना मिलना चाहिए, 36। वेर एस अगर हम लोग नॉट बाय प्रोग्रामिंग बट अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके हिसाब से करें, तो एक नंबर चाहिए, मतलब एक नम ले लूंगा मैं। ठीक है। अभी अभी हम एक एक लाइन वाइज पढ़ के उसे सॉल्व करते हैं कि नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई के हम एस्टेरिक यूज करते थे, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है। सेम नंबर इज एडेड, मतलब वही नंबर जहाँ पे क्या था, नम, सेम नंबर। ठीक है, नम, जिसका हमने रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 36। अभी हमें फिगर आउट करना है कि ये जो नम है वो क्या हो सकता है जिससे कि हमें वो मिले। ठीक है। अभी इसको मैं कमेंट में डाल के रखता हूँ और इसके हिसाब से हम इसे कोड करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमें पता है रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, 36, सो रिजल्ट में ले लूंगा 36। ठीक है। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं या फिर क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं टू फाइंड वेदर हाउ व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर फॉर दिस। ओके। सो मैं क्या करूँगा, जो रिजल्ट है, ठीक है, अभी इसको, अभी आप ये करोगे तो याद है हम लोग बचपन में नंबर के जगह एक्स लिखते थे, राइट। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 36। तो कितना होता है, ये जो x है, x 2x है, राइट। तो x 2x हुआ, मतलब x मल्टीप्लाई बाई 2x और एक और x विच इज इक्वल्स टू 36। जिसका मतलब हमें क्या मिलता है, 2x प्लस एक्स, 3x। ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 36 हुआ। अभी मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x क्या हो जाएगा, अभी वो 36 से डिवाइड हो जाएगा, विच इन रिजल्ट आई विल गेट 12। ओके। तो x इज इक्वल्स टू 12। ओके। वेर एस अभी ये सेम चीज मुझे इसमें कोड करना है। ठीक है, मैं इसको सबको ये कर देता हूँ। हम यही फॉर्मेट में चलेंगे, जैसे एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम वही इसमें। अभी रिजल्ट क्या है, हमें 36, राइट। तो 36 रिजल्ट है। वेर एस मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स फैक्टर है जिसको हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं जो रिजल्ट है उसको 3 से ही डिवाइड कर दूंगा, राइट। जिससे क्या होगा कि मुझे एक्स फैक्टर मिल जाएगा। वैसे हमने कैसे फाइंड आउट किया वो चीज़, ये सिंपल बेसिक मैथ से। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि ट्रिकी हो, कि आपको समझ में ना आए कि इसमें प्रोग्राम लिखने तो बोला नहीं है, तो इसमें हमें कैलकुलेट करने क्या बोला, हम कैसे करेंगे। तो
बहुत बेसिक मैथ्स है जहाँ पे आपका एक ऑपरेटर्स टेस्ट होगा कि आपको ऑपरेटर्स कितने अच्छे तरीके से आता है वगैरह। ठीक है, तो आई राइट द प्रिंट पार्ट एंड द नंबर इज, अभी इसे हम कैलकुलेट करेंगे और जो भी रिजल्ट होगा, वैसे आपको रिजल्ट तो पता है कि 12 है, तो आंसर आपको आ जाएगा। बस ये कोड करके आपको बताने का है, कोड करके फिर अभी मैं इसको ये कर दूंगा और यू कैन सी इट इज गिविंग द नंबर 12। ठीक है, वॉट एवर द रिजल्ट इज यू कैन put it over here. Okay, and for this part you have to do some good thinking और उतना अंडरस्टैंडिंग बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए कि हम कैसे उसे टैकल करें। ठीक है, टैकल होने के बाद हम उसे अपने प्रोग्राम में ऐड करके ये कर सकते हैं। ओके, आई होप इतना समझा होगा आज के लिए, इतने प्रॉब्लम्स हमने कर ही लिए। ओके, ऑलमोस्ट व्हाट 7 प्रॉब्लम्स लास्ट में एक किया था हमने पिछले लेक्चर में। ओके, I hope इतना कवर हुआ है। इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द, ये प्रॉब्लम्स पार्ट 1 हो गया राइट। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ एक और टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहाँ पे हमने आज देखा था इफ एल्स करके, वो एक है जहाँ पे हम आगे कंडीशन के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप we'll meet you in the next lecture and I'll just complete this। और प्रैक्टिस करने के लिए ये वाला आप वापस यूट्यूब से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यूट्यूब में वीडियो डाल दूंगा। एंड वन मोर थिंग कि वीएस कोड इंस्टॉल करो। ओके, इंस्टॉल करके ये ऑटो सेव पे रखना सो दैट यू डोंट लूज एनी ऑफ योर प्रोग्राम। ओके, जो सेव पे रहे। ठीक है, और कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स अगर मिलते रहेंगे हमें वीएस कोड में तो मैं शेयर करूंगा। ओके, so let's end this today. Thank you for joining. Bye.